गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अभी आपका सिंथेटिक फाइबर कंटिन्यूड है। आज आपका लास्ट टॉपिक उससे रिलेटेड सिंथेटिक फाइबर में जो बचा हुआ था उसका अभी डिस्कशन होगा। आपने अभी पिछले क्लास में देखा कि प्लास्टिक्स क्या है, इसके टाइप्स क्या हैं और दोनों में डिफरेंस क्या है। आज आपका एज यू नो दैट these days we are living in plastic era. Around us a lot of materials which are used in our daily life activities that is made up of plastics. So plastics as a material of choice. What is the reason that the plastics becomes so popular nowadays? इन दिनों प्लास्टिक इतना पॉपुलर क्यों हो गया है, इसके पीछे क्या कारण है, इसके बारे में हम लोग डिस्कशन अभी करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू नो दैट द एडवांसमेंट और एडवांटेज ऑफ प्लास्टिक्स हैव मेनी एडवांटेजेस ओवर ट्रेडिशनल मटेरियल्स लाइक मेटल्स एंड वुड। जो भी इन अर्लियर द मटेरियल्स विच आर यूज्ड मेनली मेड अप ऑफ मेटल्स, वुड etc. But gradually plastics takes their position. A lot of materials are made in lieu of metals as a substitute of metals. So as for example, suppose the furniture which are used in our houses, institution, offices etc. So the chair, table, bed and other materials which are made up of plastic. So due to various qualities and useful properties, plastics are the material of choice for all sorts of uses. All sorts of uses means the different usage of plastics. Due to some special properties the plastics have, and due to which they become the material of choice. Now the some important characteristic properties of plastics which makes us very popular. The first one is plastic is non-reactive. So plastic is the substance or material that is not corroded easily, as the metals are corroded by the combination of atmospheric air, water and other things. So it is not corroded. The first point, that is plastic is non-reactive, it is not corroded. As you know that the metals like iron becomes rusted automatically when it is exposed to air. As you know that air also consists some water vapor, water in the form of vapor. So in presence of water, moisture and oxygen is combined to iron and it becomes rusted. So rusting of iron is great disadvantage of the metal iron, and on the other hand plastic is non-reactive. The second point is plastic is light, strong and durable. The most important or characteristic feature that plastic is lightweight, हल्का है, मजबूत भी है, स्ट्रांग भी है, एंड ड्यूरेबल, स्ट्रांग एंड ड्यूरेबल में लास्ट लॉन्ग, लंबे समय तक चलता है. So these properties of light, strong and durability make the plastic so popular. The third one is molded into different shapes easily.
Upon heating, it can be molded into desired shape. Whatever we like, whatever we want, it can be molded into desired shape, different shapes easily. The fourth one is very important, that is quite cheap, सस्ता है, काफ़ी चीप होने के कारण भी इसका यूज होता है. इसी दूसरे चीज़ को हम दूसरे मेटल में या इसका यूज़ करते हैं तो इट कॉस्ट हाई, प्राइस इज हाई, बट प्लास्टिक गुड्स आर चीप. पुअर कंडक्टर ऑफ electricity. Poor conductor of electricity, this is why that it is used as an insulator, insulating the cables, wires. So electric wires are insulated by a special type of plastic that is called PVC. You have studied about it previously. So the poor conductor of electricity and heat, this makes these 5 points make the plastic so popular. Some other uses of plastic. In addition to that, some especially or special industries where these plastics are used. In healthcare industries. In healthcare industries, as you know that syringe, gloves, and many other plastic bottles for keeping the syrup and medicines. So these are the, in healthcare industries it is widely used. Packing materials, tablet, threads for stitching. So in healthcare industries plastics are widely used. A special plastic cookware in microwave oven. Some special plastic cookware is used in microwave ovens for cooking food. In microwave oven, the heat cooks the food but doesn't affect the plastic vessels. This is why certain heat-resistant plastics are used in microwave oven. For non-stick coating of cookware, nowadays non-stick कढ़ाई, तवा, cookware, various utensils are used, and a special type of plastic, that is Teflon, is used to make non-stick coating of cookware. So in this way, fireproof plastic, melamine is a type of plastic which is used because it has great resistance against heat as compared to other plastics. So these fireproof plastics. So in these are the different uses of. Now the plastics, अभी तो आपने एडवांटेज देखा. नाउ द डिसएडवांटेजेस. In our daily routine, plastics are widely used, but these plastics materials affect the environment badly. It creates pollution. What is the reason that plastics are very harmful, and it shows great disadvantages to our health and to pollute the surroundings? The first one is non-biodegradable. Biodegradable. Degradable means that can be broken down, decomposed biologically. Non-biodegradable means that are not decomposed biologically by the action of bacteria and certain microbes. So it remains unchanged in the within the soil or whatever it is left. जहाँ भी इसको छोड़ देंगे वहीं पड़ा रहेगा, और चूँकि इस पर इनका डिकम्पोजर्स का एक्शन नहीं होता है, इसलिए नॉन बायोडिग्रेडेबल है. नॉट बर्न कम्प्लीटली, क्रिएट पॉइजनस फ्यूम्स, धुआं, स्मोक, गैसेस बनाता है, क्रिएट एयर पॉल्यूशन, और ये सस्पेंड पॉल्यूटेंट एयर में फ्लोट करता है, एंड वी आर बाउंड टू इनहेल दैट पॉल्यूटेड एयर. So it creates air pollution as it is not completely burned. So it is very harmful. Polythene plastic wrapper blocks the drain system
ये ड्रेनेज सिस्टम को क्या करता है, ब्लॉक कर देता है और ड्रेन सिस्टम चॉक्ड हो जाता है। और यह क्या करता है, ये हमारे जो सीवेज सिस्टम है उसको पैरालाइज कर देता है। और द मोस्ट हार्मफुल इफेक्ट that it prevent or stop the percolation of water. It doesn't allow it, waterproof होता है, plastics are waterproof, so it doesn't allow water to start seepage, so it prevent or stop the percolation of water, seepage of water within the soil, and it affects the ground level water. Biodegradable and non-biodegradable, the substances which are biologically decomposed by the action of bacteria and certain microbes, they are called decomposers, are called biodegradable substance. जितना भी एग्रीकल्चर और फूड कंपोनेंट्स है, ऑर्गेनिक मैटर है, सभी बायोलॉजिकली डिकम्पोज हो जाते हैं। बस मटेरियल्स विच इज़ नॉट ईजिली डिकम्पोज बाय नेचुरल प्रोसेस और डिकम्पोजर्स इज कॉल्ड नॉन बायोडिग्रेडेबल। इसमें प्लास्टिक भी आता है, ग्लास आता है, ये सब नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस हैं। एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेज आर वेरी हार्मफुल टू आवर इन्वायरमेंट। स्टेप्स टेकन टू सेव द इन्वायरमेंट फ्रॉम हार्मफुल इफेक्ट्स। व्हाट शुड वी डू, हमें क्या करना है? हमें ऑलवेज व्हेन वी डंप और व्हेन वी थ्रो द गार्बेज, वी मस्ट differentiate or separate the biodegradable or non-biodegradable substance so that it can be recycled. Certain substances are recycled as plastics are recycled, so it will be helpful to, so it should be taken care in our mind. हमें इस पर ध्यान रखना है कि हमें प्लास्टिक का यूज करना है, लेकिन इसको केयरफुली करना है ताकि हम अपने पोल्यूशन के रेट को मिनिमाइज़ कर सकें। अब आपका गर्मी छुट्टी होने वाली है, चैप्टर आपका सिलेबस हो गया है, होमवर्क दिया जाएगा, इस होमवर्क को गर्मी छुट्टी में करेंगे और पिछले 3 चैप्टर का जो भी NCERT क्वेश्चंस हैं इसको भी आप निश्चित रूप से अपनी होमवर्क कॉपी में कर लेंगे। मैंने सॉल्यूशन भी भेज दिया है, इसलिए आप इसको करेंगे और जो होमवर्क एक्स्ट्रा मिलेगा इसे भी करके लाएंगे। फिर गर्मी छुट्टी के बाद जब भेंट होगी तब होगा। थैंक यू।